बताओ, नया चैप्टर 4th and 5th कर रहे थे ना हम लोग। आज पूरा करना था आप लोग को टारगेट। Yeah, so this is chapter 5, organizing. क्या ऑर्गेनाइज Okay. करना है, पहले जस्ट गो थ्रू मेन मेन पॉइंट्स Okay, so पढ़ते चलो। first organizing, हम्म। then they've given the meaning of organizing, and उसके बाद they've given the steps in the process of organizing. In that, there is identification and division of work, departmentalization, assignment of duties, and establishing authority and reporting relationships. Then there's importance of organizing. Uh, First point is benefit of specialization, clarity in working relationships, optimum utilization of resources, adaptation to change, effective administration, development of personnel, expansion and growth. Then comes the organizational structure. In the organizational structure, there are two types: ए, functional देयर इज structure and समथिंग divisional कॉल्ड structure. पीटर ड्रक। वो नहीं दिखा, कहाँ पे पीटर ड्रक कर। ट्रक एक चला ट्रक, ये है ट्रक ड्रंक। नहीं नहीं नहीं, नीचे नीचे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में रहेगा वो। वेरी फेमस पर्सन। So two ऊपर ऊपर structures: ऊपर functional गो structure अप। and divisional structure. Uh, अप नहीं, डाउन, यू गोइंग डाउन, गो अप। और ऊपर। यहाँ पे मिलेगा फिर। नेक्स्ट अब देख, रीड करो उसका नाम इस पेज पे। हाँ, ये पेज पे नहीं है। वो आप, हाँ है तो, है ना पीटर ड्रकर। oh, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं भाई साहब। Peter व्हाट इज, Drucker हाँ वो क्या बोलते हैं। emphasizes on the importance of having an appropriate organization structure when he says organization structure is an indispensable means, and the wrong structure will seriously impair business performance and even destroy यस, it. तो इनका डायलॉग है कि इनडिस्पेंसिबल। Organized structure is an indispensable means. ठीक है, डाउन। क्या होता है स्ट्रक्चर, चार्ट दिखाओ। ये टाइप्स क्या है, Uh, function, Functional structure and divisional structure. मतलब। Uh, func- Functional structure के अंदर they given the चार्ट चार्ट advantages. चार्ट देखो। चार्ट और डायग्राम पहले पढ़ना चाहिए। फंक्शन के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट है, परचेजिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, है ना। Purchasing. फिर डिवीजन के हिसाब से क्या होगा। They are given the advantages and disadvantages and the suitability. Then comes your division structure. Uh, this division structure comprises of separate business units and divisions. Given the advantages, the flow chart, where the manager director के अंदर there are four people, and in one of them the garments के अंदर there are again more four people. So this is the division structure. डिवीजन इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट, ऐसा है क्या, पढ़ो, है ना। और द एरिया, मतलब धीरू भाई अंबानी के 25 डिविजन है, बिकॉज 25 एरियाज है। भोपाल में अलग है, इंदौर में अलग है, ऐसा होगा ना। रीड Yes. रीड 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 क्या होता है डिविजनल। स्टार्ट विद स्टार्ट विद दिस ओनली, रीड करो। Divisional structure. Many large organizations with diversified activities have reorganized themselves away from the simpler and basic functional structure toward a divisional structure which is more simple to the activities. This is particularly true to those enterprises which have more than one category of products to offer. This is because although organization performs a set of homogeneous functions and it diversifies into varied product categories, the need for more evolved structural design is felt to cope with the emerging complexity. In a divisional structure,
The organization structure comprises of separate business units or divisions. Each unit has a divisional manager responsible for performance and who has authority over the unit. Generally, manpower is grouped on the basis of different products manufactured. Each division is multifunctional because within each division, functions like production, marketing, finance, purchase, etc. are performed together to achieve a common goal. Each division is self-contained as it develops expertise in all functions related to product line. In other words, within each division, the functional structure tends to be adopted. However, functions may vary across divisions in accordance with a particular product line. Further, each नो division नो, work as a फर्स्ट profit सेंटेंस में center. दिया है कि functions as it Functions may diversifies in vary across divisions va- according to particular product of line. diversifies into varied product categories, है ना? मतलब उसके प्रोडक्ट Yes, कैटेगरीज बहुत सारे हैं, तो द बेसिस ऑफ डिवीजन इज एरिया और प्रोडक्ट। इट इज प्रोडक्ट। जैसे अंबानी का दूध का बिजनेस है, अंबानी का रिटेल शॉप है, अंबानी का शूज का बिजनेस है, अंबानी का ऑयल का बिजनेस है, तो उसको वो अलग अलग डिवीजन बोलेंगे, राइट? इट इज नॉट जोग्राफिकल। yes. मेरा वो डाउट था तो वो क्लियर हो गया, है ना? और एक लिखा है सेकंड सेंटेंस में, ईच डिवीजन इज सेल्फ कंटेन्ड। व्हाई इज इट सेल्फ कंटेन्ड? इट हैज ऑल द फंक्शनल यूनिट्स बट फिर भी सेल्फ कंटेन्ड क्यों है? इशूज का जो फंक्शंस है उसमें उसने एक्सपर्टीज किया, इट डेवलप्स एक्सपर्टीज इन ऑल फंक्शंस related to a product line. Yes, I remember I was doing training in internship in Britannia. वहाँ पे एक person had come, manager, and he was working in the shoe industry and he had no experience okay, in the food industry, but उनको भी ले लिया। yes, तो उनको सब लोग पूछते थे कि अरे आप शूज में, बाटा शूज में काम करते हो और ब्रिटानिया में आ गए, ऐसे कैसे ले लिया आपको? तो वो अलग डिवीजन है, राइट? अब he yes. has expertise in shoes but he has no expertise in food, तो ये Yes. पूछ सकता है each division is self contained, yeah, carry on। और each division functions as a Uh, profit center, ये भी लिखा है, देखो कहीं लिखा है, कहाँ लिखा है? Repeat. Every division functions separately as a profit center, Profit center over here. Mhm. है ना? राइट, Yes. carry on। What are तो the profit तीनों center where the division? तीनों पैराग्राफ्स का समरी कैसे लिखोगे? और पता है तुमको सीबीएसई की हैबिट क्या है? एक एक वर्ड पे वो क्वेश्चन पूछते हैं, Yes. राइट, है ना? चलो, सी तुमको बिजनेस स्टडी का, मतलब एक बात बोलो, ये सिलेबस इज नथिंग। आपने कितने चैप्टर है टोटल? 12. वेल, छह कर लो, आधा सिलेबस खत्म, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। साल भर का, Yes. एक्चुअली साल भर का इश्यू ही खत्म, बट इफ यू कीप ऑन राइटिंग एवरी डे, है ना? Yes. राइटिंग स्किल्स पे अब चार्ज, अब एक अगस्त से चालू करेंगे राइटिंग स्किल्स, बहुत जरूरी है। राइटिंग चालू करेंगे 4 महीना, जैसे टेंथ में लोड किया था लास्ट मंथ में, है ना? वैसा नहीं करेंगे, Yes. केवल Okay. 1 महीना नहीं 4 महीना करेंगे, राइट? Yes. करो करो करो, क्या है, क्या है, कैरी ऑन कैरी ऑन। Okay. So, advantages. There's many benefits. Most prominent are first, like specialization helps in the development of varied skills. The divisional head, and this prepares him for higher positions. This is because he gains experience related to a particular product. Division, divisional heads are accountable for profits, and revenue and costs related to different departments can be easily identified and assigned to them. This provides a proper basis for performance measurement. It also helps in fixation of responsibility in cases of poor performance of the division, and appropriate remedial action can be taken. C.
It promotes flexibility and initiative because each division functions as an autonomous unit, which leads to faster decision making. It facilitates expansion and growth as new divisions can be added without interrupting the existing operations by merely adding other division heads and staff for the new product line. Disadvantages. The division structure has certain disadvantages. First, a conflict may arise among different divisions with reference to allocation of funds, and further, a particular division may seek to maximize its profits at the cost of other divisions. B. It may lead to increase in costs since there may be a duplication of activities across products. Providing each division with separate set of similar functions increases expenditure. C. It provides managers with the authority to supervise all activities related to a particular division. In course of time, such a manager may gain power and in a bid to assert his independence may ignore organizational interests. Suitability. Divisional structure is suitable for those business enterprises where a large variety of products are वेट manufactured वेट 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 using वेट different. तुम बताओ कि डिवीजन कहाँ पे अच्छा है कहाँ पे खराब. Think of the various shopkeepers in your area, the various companies you know. किराना वाले के यहाँ पे Okay, so डिवीजन चलेगा कि नहीं चलेगा. नहीं नहीं नो अच्छा वो won't work. क्या बोलते हैं. और कहाँ चलेगा, कौन सी शॉप पे तुम्हारे चलेगा वो बताओ. Division of work. Division यहाँ of work यहाँ won't be in any shop, like any small shops पे नहीं रहेगा. It will be like in a big stores, like you have Walmart. वैसे where there is a superior manager who and उसके नीचे like there are different heads, like one is of देखो अभी managing the अभी baby ये भी याद product. रखो कि अगर मैनेजर रखना है चार, मार्केटिंग अकाउंट्स ये वो होता है, चार मैनेजर रखना पड़ेगा, चार चीजें है ना का. Yes, तो हर डिवीजन में अलग चार 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 चाहिए, तो कॉस्ट पड़ेगा. yes, the cost will एक increase. हाँ, तो वो भी सोचना पड़ेगा. बिग बिग साइज रीड. Suitability, business structure is suitable for those business enterprises. A large variety of products are manufactured with using different productive resources. When an organization grows and needs to add more employees, create more departments, and introduce new levels of management, and decide to adopt a divisional structure. Table 1 provides a comparison of functional and divisional structure to provide further clarity to the topic. This is table 1. This is a different functional divisional structure. On the basis of formation, functional structure, formation is based on functions. Divisional structure, formation is based on product lines and is supported by functions. On the basis of specialization, functional structure, functional specialization, divisional structure, product specialization. The basis of responsibility, डोंट रीड दिस functional बिकॉज ये तो structure, तुम पढ़ लोगे difficult. बाद में. मेन था आपके को मेन पॉइंट्स Okay. पढ़ना, ये तो यू कैन डू इट है ना. नेक्स्ट. अभी क्वेश्चन आंसर Yes. नहीं कर रहे, अभी हम लोग स्टडीज कर रहे हैं. क्वेश्चन आंसर करने के टाइम ये सब Sure. क्वेश्चन आंसर काम आते हैं है ना. वो गो डाउन. मैं Okay. अब अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं एक एक लाइन को पढ़ना. चलो रीड कर लो क्योंकि इसमें से मैं वो पता है ना, सीबीएसई कहीं से भी पूछता है, एक एक वर्ड से पूछ रहा है सीबीएसई. ओके. तो आर यू श्योर सूटेबिलिटी वाला तुमने पूरा पढ़ लिया अच्छी तरह से, एक एक वर्ड पढ़ लिया हुआ है. कहीं से क्वेश्चन पूछेंगे तो अब देखो, मैनेजमेंट मस्ट कंटिन्यूसली रिव्यू इट्स प्लान. तो ऐसा पूछेंगे व्हाई मैनेजमेंट मस्ट कंटिन्यूसली रिव्यू इट्स प्लान इन टिप्स इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर. Um, they should keep on, it should continuously review its plan because it works in a dynamic environment. So its surroundings and environment keeps on changing. उसके So नेक्स्ट therefore, था they need फ्रेज to. तुमने नहीं पढ़ा. दोज एंटरप्राइजेस डू नॉट अडेप्ट डू नॉट सर्वाइव.
फाइव, तीन दो क्वेश्चन तो बहुत इजी ओके। है, है ना? समझे? वो लाइन के यस। आगे पीछे पूरा पैराग्राफ ही पढ़ो ना। ऐसा नहीं है एक बार खत्म को तुमको साल में एक बार करने का है। थोड़ी अपन बार बार बैठेंगे बिजनेस स्टडीज के लिए। यू हैव डन इट, यू यू यूज योर इंटेलिजेंस, सेव टाइम इन द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। सिंपल है। सेकंड यस। टाइम पार्ट में मत 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 अगस्त में पूरा सिलेबस खत्म कर ले भाई। बहुत प्रॉब्लम होगी आगे चल के। और यू हैव टू फोकस ऑन एंट्रेंस। स्ट्रैटेजी है कि बस अगस्त में खत्म करते हैं बिजनेस स्टडीज के साथ में। एक और बता मुझे, मैथ्स खत्म करना है, क्या खत्म करना है? टेल मी वन थिंग। वो नो दो नो, दो सब्जेक्ट खत्म खत्म बिजनेस करना है। स्टडी, बिजनेस स्टडी, बिजनेस के साथ में और एक बोल रहा हूँ मैं, इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश कभी नहीं खत्म होता। इंग्लिश मैथ्स पे फोकस करना है अपने को। एंट्रेंस के लिए इंग्लिश मैथ्स एंड ऑल दो थिंग्स पे ना। सी अभी अबाउट माय प्लान इज कि ये नेक्स्ट 4 वीक्स में 6 चैप्टर तुम्हारे रह गए, राइट? यस। हाँ, तो तुमको वही 2 वीक में 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, एक वीक में 2 चैप्टर मारो। यस। तो हर हर थर्ड डे बैठते हैं या एवरी सेकेंड डे, फिक्स अ डेज नाउ। चलो वीकली 3 वीक करते हैं, फिक्स डेज एंड टाइम। अब भी बोलो, फिक्स कर दे भाई। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। पक्का मुझे लिख के भेज देना। पक्का, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, एवरी वीक वी हैव टारगेट ऑफ 2 चैप्टर्स। यस। और फिर अगस्त में पूरा 12 चैप्टर्स पूरा हो जाएगा। फर्स्ट रीडिंग इज important and we are doing good. You are doing, you are I am relying on your intelligence level. Your comprehension is very good. तो वही चीज यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा ना, योर स्टाइल इज अ बिट लेजी स्टाइल। तो वो इसीलिए ज्यादा नहीं करना, एक ही बार करना है। अगस्त के बाद हम बिजनेस की बुक पढ़ना नहीं पड़े हमको। फिर ओके। क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग में लग जाएंगे। वो एक फ्री हो गया। फिर अब मैथ्स पे तेरे वाट लगी हुई है। मैथ्स पे मुझे नहीं मालूम था कि इतना वो तो देख, मुझे पता है वो बॉम्बे में ऐसे ही होता है। फाइनली यू हैव टू स्टडी अ लॉट। लेकिन मैथ्स पे अपने को ध्यान देना पड़ेगा। मैथ्स पे चैप्टर कितने हैं? मैथ में तेरा 11। तो प्रॉब्लम विद तेरा वाला सीबीएसई वो टेक्स्ट बुक नहीं है ना। इट इज अ वो गाइड। वो जो रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं ना, उस पे साइंस लेवल का मैथ्स आ रहा है पूरा। इनफैक्ट साइंस वालों को भी सिर्फ हाई है, यू नो दैट। योर रेफरेंस बुक व्हिच यू हैड मेंशन, यस। वो साइंस वालों को भी उतना मैथ्स नहीं है मैट्रिसेस पे, डिटरमिनेंट पे, पता है? यू हैव मोर कंटेंट। Yes, I've heard it from the senior हाँ, that यू हैव applied मोर math कंटेंट। is साइंस स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सॉल्व, आर अनएबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ कॉमर्स। ये हालत होता है। तो इसीलिए अभी साइंस का 5 चैप्टर पकड़ते हैं। ये सात, ये सब 12 चैप्टर, 4 हफ्ते में 12 चैप्टर। 2 हफ्ते में 6 चैप्टर, एक एक हफ्ते में 3 चैप्टर। 1 चैप्टर पर लेक्चर करना पड़ेगा अपने को। मैथ्स में थोड़ा प्रैक्टिस दे दूंगा टू मेक इट इजियर। हो जाएगा, है ना? yes. चलो रीड रीड अहेड। Thus, it can be said that business operates in a dynamic environment, and those enterprises which fail to adapt to change are unable to survive. Hence, management must continuously review its plans and objectives, and accordingly, the organizational structure to the enterprise should also be subjected to periodic review to determine if modification is required. An organizational structure at all times should contribute towards the achievement of the enterprise's objectives and should provide scope for initiative so that contribution of personnel can be maximum and effective. Do I need to read this chart? Because ma'am had told that this chart there is no use in the exam. You're on mute, sir. ये क्या चीज है? This.
they basically given the whole division structure. हाँ, तो क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने हर डिवीजन में अलग अलग बार बार डिवाइड किया हुआ है इसके लिए, ठीक है। चलो, गो डाउन। Yes, ओएनजीसी का एग्जांपल दिया हुआ है ना, वही ना। हाँ, रीड yes. अबाउट, अगर लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ लो, ओएनजीसी का पूरा स्टोरी पढ़ लो। Structural for transformation at ONGC. Since its inception, ONGC has been instrumental in transforming the country's limited upstream sector into a large, viable playing field. With its activities spread throughout India and significantly in overseas territories, the 1990s has begun on a क्या grim हुआ note था, for सुनो, ONGC. ओएनजीसी, गेल, सेल, ये सब गवर्नमेंट के नौ रत्न कंपनीज है, रन बाय गवर्नमेंट Yes, बट रन अंडर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हु हैव नो बिजनेस सेंस। तो उन लोग का स्ट्रक्चरलिज्म बहुत है, उनको आता ही नहीं है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, प्राइवेट में अलग चीज, प्राइवेट में एक्शन झट से चाहिए, गवर्नमेंट में वो सोचेंगे yes. 2 महीना, तब तक बिजनेस कोई और लेके जाएगा। तो ओएनजीसी ने देख प्रोफेशनली मिस्टर मैक किन से का हेल्प लिया, और दे आर कंसल्टिंग फर्म, उन्होंने ये किया कि, पढ़ो क्या किया। Uh, McKinsey's mandate was to evolve organizational structure that was far more responsive to its business needs than that based on business rules. The NGC system run by functional heads often meant delays exceeding a year in matters requiring urgent decisions on fields. Also, since responsibilities were shared at production platform between different business groups, the system degenerated into wrangling over responsibilities. Similarly, group loyalties often took precedence over the requirements of tasks, but most importantly, it was found that the performance evaluation criteria based on business group yardstick were completely at loggerhead with requirements on field. MC Kinsey recommended मैक an है, asset-based मैक, approach. मैक किन से। There's no A in that. हाँ, लेकिन वो जैसे मैकडोनल्ड बोलते हैं ना। Recommend. Oh, yeah. Okay. Recommended an asset-based approach with clearly defined responsibility in its presentation title Organization Transformation Project. Though McKinsey's recommendations were broadly accepted, coordination issues concerning commonly shared service needed to be sorted out. Finally, the first control over all service belonged to service personnel working with asset teams was vested in asset managers on grounds that being responsible for the performance of their strategic business units, they must rightfully exercise control over all personnel working with them. Even procurement powers were developed. Finally, a new structure made up of वेयर 14 assets. प्रोक्यूरमेंट पॉलिस वेयर What? डेवलप्ड, नहीं, रॉन्ग है, you made a mistake. Even procurement powers were, Evolved. what is What is devolved, evolved? ऐसा कोई राइमिंग वर्ड है, सिमिलर वर्ड। Evolved. Evolved. इवॉल्व, इवॉल्व इज, डिवॉल्व इज Oh, to like increase the betterment of the डिक्रीज किया गया performance. है, हाँ। और न्यू स्ट्रक्चर वाज मेड, Okay. 14 एसेट्स एंड 11 सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज वर रोल्ड आउट, है ना। चलो, Yeah. नाउ गो डाउन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, Formula. गो डाउन, गो डाउन। फॉर्मल में फिर क्या डिफरेंस है वो पूछेंगे, फिर आगे इनफॉर्मल, हाँ, फिर गो Informal. डाउन। इनफॉर्मल में एडवांटेज डिसएडवांटेज है ना, वो दोनों का डिफरेंस दे Yeah. देंगे, फिर नीचे उसके बाद Delegation. डेलीगेशन में क्या होता है, एलिमेंट्स, हाँ ठीक है, पढ़ो। अथॉरिटी, Uh, बोलो Honorable इन, Louis Allen. अथॉरिटी आके बोलो, लुइस एलन कौन है वो। Louis Allen. हाँ, डेलीगेशन देता है, वो बोलता है हमेशा डिवाइडेड रूल। चलो, एक होता है अथॉरिटी, नेक्स्ट, Authority. Responsibility. जहां पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे आएगा ये, ठीक है, नेक्स्ट, Accountability. अकाउंटेबिलिटी।
ठीक है ना? तीन चीज, चलो। इम्पोर्टेंस क्या है उसका? Importance, हाँ, there is no overview. ये पढ़ो, ये पढ़ो। ये चार्ट बाहर Overview करो। of अभी क्या अभी? oh, okay. Overview, the elements of delegation, meaning, authority, right to command, responsibility, obligation to perform an assigned task, accountability, answerability for outcome of the assigned task. Basis of delegation, authority can be delegated, responsibility cannot be entirely delegated, and accountability cannot be delegated at all. Origin arises from formal possession, arises from delegated authority, arises from responsibility. Flow flows downwards from superior to subordinate, flows upward from subordinate to superior, flows upward from subordinate to superior. Your views. याद 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 हुआ चार्ट? देखो, पहला है, मैं आई एम नॉट लुकिंग एट द चार्ट। पहला है राइट टू कमांड। दूसरा है यू हैव द यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरा यू आर अकाउंटेबल, ऐसा ही है ना? ऑब्लिगेशन ऑफ राइट। तीन चीज था। दूसरा है फ्लो। फ्लो पहले वाले में ऊपर से नीचे है, तो बाकी दो में नीचे से ऊपर है। राइट। Yes, अच्छा, कहाँ से आता है ये ओरिजिन? तो इस पहले से सेकंड आता है, सेकंड से थर्ड आता है, देखो। राइट। डेलीगेशन, yes, अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नॉट टू मच। और अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना? yes, जैसे मम्मी घर से बाहर जा रही है, जॉब पे जा रही है, खाना तुमको मिला नहीं मिला, तो मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस मम्मी इज अकाउंटेबल, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी है mm, वो भाई की या तुम्हारे पापा की या भाई की, जो भी घर पे था। बट फाइनल अकाउंटेबल okay, मम्मी है। yes. ऐसा है। याद याद है? टेबल याद हो गया? फ्लो ऊपर से नीचे कहाँ है, नीचे से ऊपर कहाँ है? For authority, it is niche, खाली फर्स्ट पे uh, डाउनवर्ड्स है, बाकी दोनों में। upward. हाँ। अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आती है? ओरिजिन। Sorry, ओरिजिन अकाउंटेबिलिटी। origin, वो formal position से आता है. फ्रॉम। For formal position. नहीं नहीं, अकाउंटेबिलिटी आती है फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है फ्रॉम अथॉरिटी। अथॉरिटी आती है फ्रॉम द पोजीशन यू होल्ड। Formal. मैंने उल्टा पूछा। डेलीगेशन पहले को हाँ है, थर्ड को ना है, बीच वाले को हाफ है। समटाइम्स एंटायरली Yes, नहीं कर सकते, राइट? फिर है, yes, चेक करो। yes. हो गया? गो डाउन। अभी पूरे चैप्टर का और क्या बचा है वो और भी करेंगे। इफेक्टिव डेलीगेशन का क्या फायदा है? ठीक है, गो डाउन, गो डाउन। 5 पॉइंट्स दिया उन्होंने, 6 पॉइंट्स दिया है। डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, Decentralization. सेंट्रलाइजेशन जैसे और एक पॉइंट आया, चलो गो डाउन। Then the importance. रीड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जल्दी जल्दी। खाली रीड करना है, ओनली द हेडिंग्स। First is develops initiative among subordinates. This develops of self-reliance. Develops managerial talent for the future. Quick decision making. Relief to top management फैसिलिटेट्स ग्रोथ। ग्रोथ फास्ट and होती है, हाँ। facilitate growth and better control. कंट्रोल। डेलीगेशन The डिसेंट्रलाइजेशन में difference. क्या फर्क है, ये पॉइंट पॉइंट है, गो डाउन बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं एक बार चैप्टर। यही है, राइट है ना? तो चलो,
अब भी देखो, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फर्क है, पर्पस क्या है? Purpose, delegation purpose is less the burden of the manager. Decentralization is to increase the role of the subordinates in the organization by giving them more तो authority. दोनों का अलग अलग पर्पस है, ठीक है। Yes. फ्रीडम ऑफ एक्शन Delegation क्या का है? is to reduce the फ्रीडम burden. का एक्शन क्या है? Sorry. फ्रीडम ऑफ एक्शन, Freedom of who action. who can take action? Delegation. Delegation it is more controlled by the superiors. Means action will be taken by the superiors. Decentralization, there is less control by the superiors, and greater freedom is there. या Then थिंक on the ऑफ अ basis of सेल्स कंपनी, जो status, सेल्स कंपनी डिसेंट्रलाइजेशन रहती है कि तुम एरिया वाइज जाओ, सामान बांट बेच के आओ, वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन रहेगा, राइट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहेगा yes, डेलीगेशन, जाओ पता लगाओ मुझे बताओ मैं फैसला लूंगा, है ना। yeah. और स्टेटस क्या है? It is followed to share of tasks. Decentralization is the result of the decision of the top management. ठीक है, स्कोप? It is a narrow scope as it is limited to superior. Decentralization is a wide scope as it is an extension to delegation. नेचर? Delegation is compulsory and decentralization is optional. तो क्या हो रहा है कि वो वो सेल्स वाले को बोल रहा है कि तुम सामान बेच के आओ, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डेलीगेशन को सोचो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो सामान बेचने का नहीं, बताओ पूछो उसके यहाँ पे स्टॉक खाली है क्या, उसको कितना ऑर्डर चाहिए, तो आके बताएगा सर उसको दो चॉकलेट चाहिए। अब उसको चॉकलेट देना ना देना ये बॉस फैसला करेगा, सुपीरियर, है ना। नैनोस्कोप इसलिए लिखा Okay. हुआ है। Yes. और डेलीगेशन में जाओ उसको बेच के आओ, मुझे 1,000 प्रॉफिट चाहिए आज, कुछ भी करो, Okay. तो उसको पावर मिल जाता है ना फिर। Yeah. चलो वो आप अभी एक काम करेंगे, आई वॉन्ट यू टू प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन ही निकालो पहले। It should be board questions or या normal यस, नहीं कोई भी निकालो, तेरे फ्रेंड्स भी है board. ना, कहीं के कोई और कॉलेज Yes. में है कोई? Yeah, but they aren't CBSE graduates. नॉट सीबीएसई? No. ठीक है, जहां से मिलता है वो निकालो, पांच छह क्वेश्चन निकालो पेपर ज्यादा नहीं, उसमें यू विल गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट, Okay. तो यू कैन गेट समथिंग स्पेसिफिक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स ऑफ दिस चैप्टर मिल जाएगा, है ना। Yes. Yes. तो बेसिकली दे विल आस्क यू डिफरेंशिएशंस, इसमें कौन सा डिफरेंशिएशन है, फंक्शनल डिवीजन वाला, Then delegation, decentralization, common informal. कॉमन इनफॉर्मल रहेगा, राइट, है ना। तो इसमें तीन चार पॉइंट्स आ जाएगा, गुड। और एडवांटेज डिफरेंस बहुत सारे हैं। Yeah. कैन यू मेक अ मेमोरी मैप इसका? आई हैव टॉट यू ऑल द बहुत पॉइंट्स। बड़ा रहेगा. नहीं नहीं, एक पेज पे आएगा, तो आप जैसे इसका था ना ओएनजीसी का, हाँ. वो बनाना ट्राई करना होएगा, पहले दो दो पेज पे आएगा, दो पेज ले डबल पेज एंड मेक, Okay. ट्राई करना, क्योंकि Uh, ये so like so I need to write the topic name and then उसपे advantage नहीं, and चार्ट चार्ट फ्लो disadvantages. चार्ट, अब इसमें पांच टॉपिक्स है इस चैप्टर में, राइट, एम आई रॉन्ग? Yes. 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 Correct. हाँ, पांच में फिर नीचे रहेगा दो दो एडवांटेज, इस पर इसके दो बॉक्स बनेंगे। Okay. So what in the box I need to write the content. हाँ, तो एडवांटेज में 5 पॉइंट्स है, Yes. तो यू राइट द 5 पॉइंट्स के नाम, जैसे यहाँ पे लिखा है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, Okay. खाली ये हेडिंग्स का लिस्ट, Okay. दो Understood. दो पेज में हो जाएगा, बट बॉक्सेस में Okay. एडवांटेज एडिसवांटेज साथ में आना चाहिए बॉक्स में, तो वो क्या होगा विजुअली, इट इज इजी फॉर द ब्रेन टू कॉम्प्रिहेंड, Okay. है ना। ऐसे 5 सेट बन जाएगा, खत्म, Understood. ट्राई करो, ठीक है। Yeah. आज के थर्सडे, वी मीट ऑन सैटरडे, तब तक हो जाएगा ये, Yes. ठीक है, चलो बाय।
और वो बाय क्वेश्चन बाय। पेपर्स मैं भेजने को चालू कर रहा हूँ अभी, वो भी स्टार्ट कर, कल से चालू करता हूँ, तेरे को भेजता हूँ वर्कशीट्स, ओके। बेसिक बेसिक चालू कर देंगे, ठीक है। ओके। चल बाय। बाय। आज बहुत गुड बहुत नाइट। मजा है।